Surface energy and surface tension. As we have discussed that an extra energy is associated with surface of liquid, the creation of more surface, keeping other things like volume fixed require additional energy. To appreciate this, consider horizontal liquid film ending in bar, free to slide over parallel guides. Now suppose that we move the bar by a small distance d as shown. Since the area of the surface increased, the system now has more energy. This means that some work has been done against an internal force. Let this internal force be F. The work done by the applied force is gonna be F dot d, force into displacement. From conservation of energy, this is stored as additional energy in the film. If the surface energy of the film is S per unit area, the extra area is 2dl. A film has two sides and the liquid in between. So there are two surface and the extra energy is given by S dot 2dl, that is equal to FD. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो D से D कैंसिल, S इज इक्वल टू F बाई 2L. S है यहाँ पे हमारे पास सरफेस टेंशन या फिर मैग्नीट्यूड है किसका, सरफेस टेंशन का. वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया कितनी सरफेस एनर्जी है या फिर लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है पर यूनिट लेंथ, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, surface tension. So far we have talked about the surface of one liquid. More generally, we need to consider fluid surface in contact with other fluids or solid surface. The surface energy in that case depend on the material on both sides of the surface. For example, if the molecule of material attract each other, surface energy is reduced, while if they repel each other, surface energy is increase. मतलब कोई भी एक लिक्विड है, उसके मोलिक्यूल्स अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उनका साइज भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, सरफेस एनर्जी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी. और जैसे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो उनकी सरफेस एनर्जी भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ठीक है. The surface energy is increased. Thus, more appropriately, the surface energy is the energy of the interface between two material and depend on both of them. जैसे कि एक ग्लास के अंदर हमने लिक्विड डाल दिया तो जो सरफेस एनर्जी होगी वो ग्लास सॉलिड और जो उसके अंदर फ्लूइड डाला है लिक्विड, दोनों पे डिपेंड करेगी. We make the following observation from above. Surface tension is force per unit length or the surface energy per unit area acting in the plane of the interface between the plane of the liquid and any other substance. It also is the extra energy that the molecule at the interface have as compared to molecule in the interior. Second is, at any point on the interface beside the boundary, we can draw a line and imagine equal and opposite surface tension force per unit length of the line acting perpendicular to the line. In the plane of the interface, the line is in equilibrium. To be more specific, imagine a line of atoms or molecule at the surface. The atom to the left pull the line inward towards them. Those to the right pull it towards them. This line of atom is in equilibrium under tension. If the line really marks the end of the interface, as in figure 10.16 A and B, there is only the force S per unit length acting inwards. Table 10.3 gives the surface tension of various liquid. The value of surface tension depend on temperature. और जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन विस्कोसिटी क्या होता है लिक्विड्स के अंदर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, वैसे वैसे विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है. पढ़ा था ना. इसी तरह गैस में उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है. और सरफेस टेंशन का भी सेम फंड है लिक्विड्स के केस में. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी. यानी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. अ फ्लूइड विल स्टिक टू a solid surface if the surface energy between the fluid and the solid is small. एक फ्लूइड है ना, वो स्टिक करेगा सॉलिड सरफेस से कब, जब उसकी और सॉलिड सरफेस की जिसके अंदर वो है उसकी सरफेस एनर्जी कम होगी किसके सम से, सॉलिड एयर और फ्लूइड एयर की एनर्जी के सम के. ठीक है. नाउ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड. इट कैन बी डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटली as schematic shown in the figure 10.18. A flat vertical glass plate below which a vessel or some liquid is kept form one arm of the balance. The plate is balanced by weight on the other side with the horizontal edge just over water. The vessel is raised slightly till the liquid just touches the glass plate and puts it down a little because of surface tension. Weights are added till the plate just clears water. Suppose the additional weight required is W, then from equation 10.22 and the discussion given there, the surface tension of the liquid air interface is W by 12. Weight per unit length के हिसाब से ले लेंगे mg by 12, where m is extra mass, L is length of the plate edge. The subscript LA emphasizes the fact that the liquid air interface tension is involved. LA का मतलब liquid air.
time pass. Angle of contact, the surface of the liquid near the plane of contact with other medium is in general curved. हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, ऐसे लिक्विड डाला हुआ है हमने किसी भी बीकर के अंदर, तो वो क्या होता है, यूजली कर्व्ड शेप में होता है. मोस्टली जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो तो कनकेव शेप में ही आते हैं. The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. Angle of contact क्या होगा? The angle between tangent to liquid surface. जो लिक्विड है हमारे पास उसके तो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इन दोनों के बीच में टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. इट इज denoted by theta. It is different at interfaces of different pair of liquids and solid. The value of theta determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets on it. For example, water form droplets on lotus leaf as shown in the figure while spreads over a clean plastic. इस तरह से different shape of water drop with interfacial tension. A lotus leaf on a lotus leaf on a clean plastic plate. lotus leaf पे डालेंगे तो वो एक ड्रॉप बन जाएगी, प्लास्टिक प्लेट पे डालेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा. तो लिक्विड के टेंजेंशियल और सॉलिड के बीच का एंगल, वो एंगल चेक कर लेंगे. वी कंसिडर 3 इंटरफेशियल टेंशन एट ऑल द 3 इंटरफेस, लिक्विड एयर, सॉलिड लिक्विड, तीनों चेक करेंगे. और फिर सॉलिड लिक्विड देख लेंगे किसके कंपेयर में, लिक्विड एयर और सॉलिड एयर की. ठीक है. एट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट द सरफेस फोर्स बिटवीन द 3 मीडिया मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. फ्रॉम द इक्वेशन 10.19b द फॉलोइंग रिलेशन इज इजीली डिराइव्ड. एस एल ए कोस थीटा प्लस एस सरफेस सॉलिड, सबसे पहले लिक्विड और एयर का लेंगे, ऐड कर देंगे सॉलिड लिक्विड का, और फिर चेक करेंगे किससे, सॉलिड और एयर से. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. इफ ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा, जब सॉलिड और लिक्विड वाला ज़्यादा होगा किससे, लिक्विड और एयर वाले से, एज इन द केस ऑफ वाटर लीफ इंटरफेस. while it is active if solid liquid is less than liquid air, as in case of water plastic interface. When theta is an obtuse angle, then molecules of liquid are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid. It costs a lot of energy to create a liquid solid surface, and liquid then does not wet the solid. This is what happened with water on a waxy or oily surface and with mercury on any surface. On the other hand, if the molecule of liquid are strongly attracted to those of the solid, this will reduce as surface liquid, and therefore cos theta may increase or theta may decrease. In this case, cos theta is acute angle. This is what happened for water on glass or on plastic, and for kerosene oil on virtually anything. Soap, detergent and dyeing substance are wetting agent. When they are added, the angle of contact becomes small so that these may penetrate well and become effective. Waterproofing agent on the other hand are added to create a large angle of contact between water and fiber. ड्रॉप एंड बबल, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है ना, जो वाटर बबल होता है और एक सोप बबल होता है, उनमें फ़र्क होता है दोनों में. वाटर बबल के अंदर तो एक इंटरफेस होता है, जबकि जो सोप बबल होता है ना उसमें 2 इंटरफेस होते हैं. आर कंसिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल आर स्फेरिकल. इट if effects of gravity can be neglected. You must have seen this especially clearly in small drops just formed in a high speed spray or jet and in a soap bubble blown by most of us in childhood. Why are drop and bubbles spherical but keep soap bubbles stable? As we have been saying repeatedly, a liquid air interface has energy. So, for a given volume, the surface with minimum energy is the one with at least area. The surface has this property, though it is out of the scope of the book, but you can check that a sphere is better than at least a cube in this respect. So, if gravity and other forces were ineffective, liquid drops would be spherical. Another interesting consequence of surface tension is that pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside.